today we are going to begin with the lesson number 10 of your class 6 English grammar, that is verbs. Verbs क्या होती हैं? All doing words are called verb. All action words are called verbs. So let's begin with this lesson. Verbs are words that expresses an action, occurrence or a state of being in a sentence. वर्ब वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में क्या दिखाते हैं, एक एक्शन होता हुआ दिखाते हैं, कोई अकरेंस दिखाते हैं या स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं. लाइक इन सिंपलर वर्ड्स अ वर्ब इज अ डूइंग और बीइंग वर्ड. क्या होता है वर्ब? सिंपलर वर्ड्स में डूइंग और बीइंग वर्ड होता है. लाइक सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. इन एवरी सेंटेंस द वर्ब हैज अ सब्जेक्ट. हर सेंटेंस में वर्ब के क्या होता है, सब्जेक्ट होता है. यू कैन फाइंड आउट द सब्जेक्ट बाय आस्किंग हु और व्हाट डिड समथिंग. आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो? एक क्वेश्चन पूछोगे who did something, what does he had done. सो इससे क्या निकाल सकते हैं? हम सब्जेक्ट निकाल सकते हैं एक सेंटेंस में से. लाइक तनु sang a song. वर्ब क्या है हमारी? sang हो गया. who sang a song क्या है? who क्या है हमारा? who sang a song? तनु ने sang तो तनु क्या हो गई? हमारी सब्जेक्ट हो गई. नाउ वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. All sentences have a verb and a subject. हर sentences में verb होता है, subject होता है. Some verbs have an object too. कुछ verbs में object भी होता है. Like to know the subject, ask who or what. अगर हम subject जानना है, who और what question पूछेंगे verb की sentence में, like before the verbs लगा के. To know the object, ask who or what after the verb. अगर हम subject जानना है, object जानना है, तो हम verb के बाद who और what लगा देंगे, हमें अपना आंसर, हमारा object मिल जाएगा. Now Rohan was the captain. Verb क्या है हमारी? was है ना. So who was the captain? Rohan. So Rohan क्या है हमारा? subject है. Was what क्या था वो? The captain. तो captain क्या है हमारा? object है. Priya scored a goal. Who scored? Verb क्या है हमारा? scored. So who scored? Priya. Priya क्या हो गई? subject हो गई. What does Priya scored? What scored what? ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, मीन्स अ गोल. ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स और डिस्ट्रांजिटिव वर्ब्स, ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब्स क्या है? नाउ सम वर्ब्स डू नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग बाय देमसेल्फ. कुछ वर्ब्स अपने आप में कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करती, सो उनको कहते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब्स. लाइक द चीफ मिनिस्टर मेड व्हाट? कमल ate. If we add object of these verbs, हम अगर इसमें object लगा देंगे, the meaning becomes complete. हमारा complete meaning आ जाएगा. Like the chief minister made an appeal. Deepak ate apples. So transitive verbs को किस चीज की need होती है? Object की need होती है. So a verb that requires an object to complete its meaning is called a transitive verb. जिन verbs को क्या चाहिए होता है? वो object चाहिए होता है. मीनिंग कंप्लीट करने के लिए उनको क्या कह देते हैं? हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कह देते हैं. नाउ इन ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? सम वर्ब्स आर कंप्लीट बाय देमसेल्व्स. कुछ वर्ब्स अपने आप में कंप्लीट होती हैं, सो दे डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस. उन्हें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती सेंस कंप्लीट करने के लिए. लाइक द चाइल्ड स्माइल्ड, द स्टार्स वर ट्विंकलिंग. इनको ऑब्जेक्ट की नहीं है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए. A verb that does not require an object to make sense but makes good sense by itself is called an intransitive verb. A verb that does not require an object. जिन verb को एक object की requirement. Distransitive verb. What are distransitive verbs? A verb that can have two objects is called distransitive verb. जिन verb में दो object होते हैं उनको हम distransitive verbs कहते हैं. Like verbs like bring, send, tell, give, offer, teach, write. ये क्या है? Are often used as distransitive verbs. Why? Father sent Manasi a new woolen dress. मानसी क्या है? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई, और वुलन की ड्रेस क्या हो गई? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. Now the English teacher taught us a new lesson. Us क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड लेसन क्या है? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. Now auxiliary and main verbs क्या है? Auxiliary verbs are verbs used with another verb. Auxiliary verbs क्या है? वो verbs होती है जो दूसरी verbs के साथ यूज होती है to make tenses, passive forms, etc. Tenses को passive form करने के लिए. Example, he was making a new experiment. Was क्या है हमारा? Auxiliary verb है. Making क्या हो गया हमारा? Main verb हो गया. Now she has left. Has is the auxiliary verb. Left is the main verb. Why? There are three primary auxiliary verbs like be, have, to. Be और have और do क्या है हमारे? auxiliary verb. हमारी three primary auxiliary verbs है.
Like the primary auxiliary verbs can also be used as main verbs. इसको main verbs की तरह भी use कर सकते हैं. Like he is happy, ये क्या है हमारा, is क्या है हमारा main verb. He is decorating the room, ये क्या है हमारा auxiliary verb है. Modal auxiliaries क्या होती हैं? Modal auxiliaries are auxiliary verbs that cannot be used as main verb. ये वो verbs होती है जिनको main verbs की तरह हम use नहीं कर सकते. Like in addition to 3 primary auxiliary verbs, like be, have, to, there are 11 modal auxiliary verbs like will, shall, can, may, must, ought to, would, should, could, might, used to. So modal auxiliary verb can never stand alone in a sentence. हर sentence में alone stand नहीं कर सकती. So that's all for So finite and non-finite verbs क्या होती हैं? Two verbs like two, जिसमें जिन verbs के आगे हम to लगाते हैं, like to write, to play, to pray, और and ing form लगा देते हैं उसमें writing, praying are called non-finite verbs. इनको क्या कहते हैं? Non-finite verbs कहते हैं. Other verbs are finite verbs. So इनके अलावा की जो verbs होती है वो क्या होती है? हमारी finite verbs होती है. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.